वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस और मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की वजह से बेहद परेशान है। हर वो शख्स, हर वो इंसान जिसको कुछ ज़रा बराबर भी बीमारी लाहक होती है, वो ये सोचना शुरू कर देता है कि शायद वो कोरोना का बीमार हो चुका है, शायद वो कोरोना का पेशेंट बन चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना की इलामात क्या हैं, कोरोना से रिकवरी का तरीका कार क्या है, और अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो क्या रेमेडीज़ यूज़ की जा सकती हैं ताकि वो जल्द अज जल्द उससे रिकवर हो सके। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो मेहमान जो ख़ुद कोरोना के पेशेंट रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 वीक्स, विद इन 14 डेज़, 14 दिन के अंदर दोनों रिकवर हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये इतनी जल्द रिकवरी किस तरीके से की, क्या उनको अलामात क्या ज़ाहिर हुई जब उन्होंने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके साथ साथ जब वो आइसोलेशन में थे, अलहदगी में थे, हॉस्पिटल में थे या घर में थे, तो किस तरीके से क्या खुराक उन्होंने इस्तेमाल की, क्या फूड वो यूज़ करते रहे जिसकी वजह से बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर वो कोरोना से सेहतयाब हुए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नौजवान जो सियालकोट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर अमीर हमज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं यूके से मार्क गैरेट जो एजुकेशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं और करंटली डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड। मार्क, थैंक you very much that you have joined us today from UK, and we are glad to talk to you because you recently got recovered from COVID-19 virus. So please tell us something first, that how did you get this COVID-19 virus, please? Well, I'm not sure how I got it because I don't think anyone really knows how they got it. But I think it might be because I met some people about 4 or 5 days before I got the symptoms who had returned from China. And I distinctly remember not shaking their hand. But at the time, it was at the time when we weren't really taking it very seriously. So in hindsight, maybe I shouldn't have met them, but it was very difficult at that point because we had very little information from the government. Yeah, that I agree. You cannot remember that how did you get it, but I will ask one typical question, keeping in view the Pakistani audience here. Most of Pakistanis here, they believe that there is not such kind of virus, there is no any corona, nothing like this. They are enjoying. So please tell them the corona is there. I can 100% confirm to your viewers that coronavirus is a live virus. It's a dangerous virus and it's a deadly virus. In my experience, which we'll talk later on, will testify that I would say to everybody, you do not want to get this virus. All right. So हमज़ा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए कि बहुत खुशखबरी वाली बात यह है कि आप रिसेंटली कोरोना से रिकवर्ड हुए हैं। पहले हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को देखते हुए, जैसा कि आप ख़ुद पाकिस्तानी हैं, सियालकोट में मौजूद हैं, तो ये बताइए हमज़ा कि ये क्या हमारे लोग अभी तक सोच रहे हैं कि ये कोरोना भी कोई चीज़ है या नहीं है, ज़रा इनको प्लीज़ बता दें कि कोरोना कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, प्लीज़। देखें जी, पहली बात तो ये है कि कोरोना की वजह से देखें पूरी दुनिया बंद है। जी, सारी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हुई है। ऐसे ही कोरोना एग्जिस्ट करता है तो इसीलिए सारा कुछ बंद है ना। यहाँ पे पाकिस्तान में भी लॉकडाउन चल रहा है, इसके पेशेंट आ रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है और आप सही भी कह रहे हैं, लेकिन लोगों को वो ये कहते हैं, बहुत सारे लोगों में ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, पैसे लेने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए ये सिर्फ बनाया जा रहा है कि कोरोना है। आप कोरोना से खुद अफेक्ट हो चुके हैं, कोरोना के मरीज़ रहे हैं, अभी माशाल्लाह आप रिकवर्ड हो चुके हैं। तो ये बताइए कि क्या कोरोना है भी या नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस से ज़रा उन्हें लोगों को बताएं प्लीज़।
دیکھیں جی میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے مجھے تو کچھ فیل نہیں ہوا. مجھے صرف ایک دن ہلکے پھلکے سے سمٹم آئے تھے, فیور ہوا تھا, اور اس کے بعد میں نارمل تھا, جیسے ابھی ہوں اسی طرح رہا ہوں. مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس کے زیادہ کوئی افیکٹ نہیں ہوئے. حمزہ, اس میں آپ کی بات بالکل بجا ہے. یہ سمٹمز کے بارے میں بالکل ضرور ڈسکس کروں گا. سوال میرا اگین وہاں پہ ہے کہ عوام کو یہ بتا دیں کہ خدا را بچیں, یہ واقعی کرونا نام کا وائرس موجود ہے اور یہ بالکل لائفز کو افیکٹ کرتا ہے. جی بالکل, اس پہ میں یہی کہوں گا کہ اپنا اس کو جو ہے نا سیریس لیں. یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس سے پوری دنیا میں دیکھیں اپنا جو ہے تقریباً 2 ملین سے زیادہ جو ہے پیشنٹس ہیں. اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے نا اتنے پیشنٹ ہیں. جی بہت شکریہ حمزہ. Mark, I would definitely ask that what are the symptoms of this corona? Because here in Pakistan the mixed you can say the opinion are being observed by the people. Some says these are the symptoms, then doctor suggests the other symptoms are there. So as a patient, that what can you say about what are the common symptoms that you have personally observed while you were infected by this virus, please? Well, I think the point is at the start of this, we were told that the symptoms were a dry cough and a fever. Yes. So a number of people that got the virus and had different symptoms probably thought at the time they didn't have the virus. So my personal symptoms were that I lost my sense of smell and taste and completely lost my appetite. So I didn't eat food for 2 weeks. I ended up losing 28 pounds in weight in 2 weeks. 28 pounds? Yeah, I lost a serious amount of weight. I mean, I couldn't sleep. I struggled to get out of bed. But I also had a very, very violent cough. But the cough was not a dry cough. It was a cough with phlegm, yeah? And at one point, I nearly considered phoning 999 to go to hospital because the cough was so violent I couldn't breathe. So I didn't get the fever, but I did have a temperature, yeah? So you did not have the fever? No, but I had a temperature, but not the fever, yeah? All right. So this lasted for well over 2 weeks. But the after effects are, and this is what people really need to understand. I mean, I'm 54. I'm a little bit older than Hamza, I guess. But I'm pretty fit, yeah. Yeah. But I now have a problem with my lungs because the virus attacks your lungs. So at the moment I'm rehabilitating by walking, but I can only walk on the flat. So I've been walking 5 to 10 miles every other 2 days. But if I try and walk up the hill, then I have again. So I've retained the cough. So the impact on the lungs is really tough. This is something. The practical experience you're sharing with us with respect to your symptoms regarding corona infection. That if I conclude these symptoms for my Pakistani people, so you have said it was personally that you have observed was the loss of smell. That is also being suggested here by the doctors, and because the doctors even says that once you lose your sense of smell, so this is one of the symptoms of corona. Alongside you, this is something really new for us, that you lost a weight of around 27 pounds in 2-3 days. So loss of weight is another symptoms of corona that you have observed. And finally, you were not in position to go to bed, were having problems to sleep, and finally a bad cough and a temperature as well, but not the fever. Am I right? That's correct, yeah. So
मूविंग बैक टू मिस्टर हमजा, आप प्लीज़ ज़रा ये बताइए कि जैसे मार्क का कहना था कि ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खांसी होगी, बुखार होगा, फ्लू होगा, नोज़ बह रही होगी, तो इन सारे सिम्टम्स के अलावा जो मार्क ने जो सिम्टम्स आपने ऑब्ज़र्व किए हैं, जिसमें से उनका कहना था कि सबसे पहले उनको जो लॉस्ट ऑफ स्मेल यानी सूंघने की इस्तात जो है वो उनकी ख़त्म हो गई थी। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया बड़ी मुश्किल से वो सोते थे, सोना बड़ा मुश्किल उनके लिए हो गया था। तीसरे नंबर पे उन्होंने ये बताया कि उनको बुखार नहीं था लेकिन टेम्परेचर ज़रूर था, बॉडी टेम्परेचर जो थर्मामीटर से अगर कैलकुलेट करते थे तो वो डेफिनेटली मौजूद था। और इसके साथ साथ जो बड़ी एक नई और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई कि 2 दिन के अंदर तकरीबन पाकिस्तानी, अगर हम केजीज़ में बात करें तो तकरीबन कोई 12 से 14 किलो वज़न उन्होंने लूज़ किया है। तो ये भी कोरोना के सिम्टम्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है उन्होंने हमारे साथ शेयर की। और ख़ास तौर पे वो बता रहे थे कि खांसी उनको काफ़ी मकदार में जो है वो आ रही थी, सूखी खांसी जिसकी हम बात करते हैं। तो ये सिम्टम्स वहाँ पे मार्क के साथ थे। तो आप अपने सिम्टम्स के बारे में ये बताइए कि जब आपको कोरोना ने अफेक्ट किया तो काइंडली क्या डिफरेंट सिम्टम्स थे जो आपने ऑब्जर्व किए? देखें जी, मैं इसमें पता नहीं मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला का कोई खास करम था या दुआएं थी। मुझे सिर्फ पहले दिन हल्का सा फीवर हुआ है जब मैं फ्रांस से आया हूँ 2 दिन बाद, और उसके साथ जो है बॉडी में थकावट थी, टायर्ड था। मैंने सोचा शायद ये अपना ट्रैवलिंग की वजह से है, सोया नहीं 2 दिन, इस वजह से मैं भी हुआ हूँ। लेकिन फिर मुझे मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे कहा जी अपना टेस्ट करवाओ, आजकल वबा फैली हुई है कोविड-19 की, में भी इस तरह का कोई मसला हो। तो फिर मैं टेस्ट करवाने चला गया और वो पॉजिटिव आया। और उसके अलावा मैं जितने दिन भी क्वारंटाइन में रहा हूँ, मुझे किसी दिन एक दिन भी ना बुखार हुआ है, ना मेरा ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो हाई हुआ है। इस तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी रूटीन नॉर्मल थी, मैं नॉर्मल सोता रहा हूँ, नॉर्मल खाता पीता रहा हूँ, मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं, मैंने कोई इस तरह की जो है नई प्रॉब्लम फेस की। ठीक है, तो हमजा अगर हम बात करें, जैसे अभी मार्क भी बता रहे थे कि ये वेरी करते हैं, ये सिम्टम्स ये सारे जेनेरिक नहीं है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप जैसे बता रहे थे कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ हल्का बुखार महसूस हुआ है और जिस्म में थकावट महसूस हुई और टेस्ट करवाने पे आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है। जी सही। I'll coming back to Mark. Mark, once you came to know that you have been infected by the virus, then what were the immediate steps taken by you to get it recovered, please? Well, I started getting symptoms, and it wasn't until a week later. I tried to convince myself that I had bronchitis. Yeah. So I was in denial. And then I phoned my doctor a week later, and he told me the symptoms meant that I had the virus. I then contacted a friend for a second opinion, and essentially their advice was I needed to stay at home, I needed to self-isolate, but if the breathing problem became bad, I should phone 999 and go to hospital. But the advice was not to go to hospital if I could possibly achieve it. Because as you will know, the problem with going to hospital, particularly right now, is there's lots of people with the virus. And, you know, it's not a place you want to be. So Mark, did you quarantine yourself, isolated yourself at your home, or you went to the hospital? No, I quarantined at home, which was the advice from the doctor. I live on my own, so it was relatively easy. And I just survived on isotonic drinks for 2 weeks, staying on my own. And then after 2 weeks, I started to get my appetite for food back. And then after 2 weeks, I started eating. All right, that's great. Mark, important questions with respect to your whole duration of isolation. You went for 2 weeks isolation at your home, but in these 2 weeks, were there other people available, or you can say the present in the same home where you were living with, or you were
entirely the one who was there in a flat, or you can say the apartment? I was staying at my house on my own, but I had a friend who could bring, so like isotonic drinks, I needed a friend to bring them to the door and leave them outside, yeah? So that's the way I survived. But the first 2 weeks I didn't eat. I actually self-isolated for probably eventually 4 weeks. That's great. Mark, tell me, within these 2 weeks, what food you had it? I mean, I just want to take an overview about the whole, you can say, the remedies or the precautions you took during your isolation. What kind of food you had it, what kind of medicines you were having it, and what were the strategies adopted by you once you were there in isolation to get it recovered within a time? Yeah. So like I said, the first 2 weeks I didn't eat. I just had isotonic drinks. I also had a very bad headache, and I was told to take paracetamol. Paracetamol? Not ibuprofen. The advice was take paracetamol for the headache, but it didn't have much impact because it was very tough, the headache. But after the 2 weeks I started eating. I made sure that I just started eating really healthy food, because the advice on the British NHS website was, if you're going to start eating, was to eat healthy food, so fruit, yogurts, vegetables, chicken, not eating fatty food. All right, but what about within the tenure of 2 weeks, because it's 14 days, so 14 days without food. I mean, what were you taking between these 2 weeks? What was the food? Well, I didn't. So I had water, and I had Lucozade isotonic drink to give me some energy. I mean, you can survive, when the body can survive on water for quite a long time. All right, so you just had the liquids only. Yes. Apart from liquids, you did not take anything to eat? No. Because I didn't want to eat. I had no appetite to eat. All right. So means you did not have. So the first thing I ate, it was unhealthy. It was ice cream, because that was what my taste bud wanted. Ice cream. Yeah? All right. And then I moved to healthy food. Okay. So for 2 weeks you did not go for a food because you were not having an appetite for a food, but you just you completely had a trust on the water, and alongside the other liquids, you were just having to make yourself comfortable to live in. Yes. All right. So Mark, alongside, I mean, within a tenure of 2 weeks, did you have the other some sort of a medication as well? As you mentioned, the paracetamol previously you were taking, but that did not work. Apart from paracetamol, did you have anything else as well? No, and the doctor didn't prescribe any medicine because it's a virus. So it's not a bacterial infection, it's a virus. So actually, it's your body that has to attack the virus. So to be honest, there was no medication that can, and we don't have a vaccination. We don't have anything right now because it's a new virus. Understand. Hamza, I'll be coming to you. आपको जब आपने टेस्ट करवाया, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके अंकल ने आपको बताया कि आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए, आपने टेस्ट करवाया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद मुझे ये बताएं कि क्या आप अपने घर में आपने अपनी मेडिकेशन स्टार्ट की, घर के अंदर आइसोलेट हुए, या आप गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में गए या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए? थोड़ा सा ये बताइए प्लीज़ हमें। मुझे जब पता चला टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो मैंने अपने डॉक्टर को कॉल की फ्रांस में, और उसने मुझे यही कहा था कि आप घर में आइसोलेट हो जाएं। ठीक है। और मैंने सोचा, यही प्रोग्राम बनाया था कि मैं घर में आइसोलेट हो जाता हूं, लेकिन फिर मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर थे, उन्हें कॉल की, और उन्होंने फिर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और AC ETC सबको भेजा, तो फिर वो मुझे जो है सिविल हॉस्पिटल सियालकोट ले गए। अच्छा। और मैं फिर वहाँ पे क्वारंटाइन रहा हूँ। ठीक है। तो कितने दिन वहाँ पे आपने गुजारे हमजा, वहाँ पे अपने आइसोलेशन के? और जो सिविल अस्पताल सियालकोट की हम बात कर रहे हैं, और कितने मरीज़ वहाँ पे मौजूद थे, या आपसे पहले कितने मरीज़ मौजूद थे, और कितना अरसा आप वहाँ पे रहे,
اور جتنا عرصہ بھی آپ وہاں پہ رہے آپ کی فوڈ کیا تھی, آپ میڈیسنز کیا لیتے رہے, آپ نے اس کے علاوہ اور پریکاشنری میئرز کیا لیے کہ آپ الحمدللہ شارٹ ٹائم کے اندر ریکور ہوئے؟ میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو میرا خیال ہے وہاں پہ پازیٹیو جو تھا میں اکیلا ہی تھا, اور کچھ لوگ آئے تھے لیکن انہوں نے جو ہے نا 2-3 لوگ اور تھے انہوں نے ٹیسٹ بھیجے ہوئے تھے, اور بعد میں ان کے نیگیٹو آئے اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا. اور جتنا ٹائم میں وہاں پہ رہا ہوں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک رہا ہوں, میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی. صرف یہ ہے کہ ڈائٹ میری اچھی تھی اور میں اپنا ڈیلی جو ہے اسٹیم لیتا رہا ہوں اور ہاٹ واٹر یوز کرتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے کوئی خاص جو ہے نا کوئی میڈیسن وغیرہ کوئی نہیں یوز کی, نہ مجھے ضرورت تھی. میں نے کچھ ایسا فیل نہیں, مجھے اس کی وجہ سے کوئی انفیکشن نہیں ہوا اور میں نے کوئی میڈیسن بھی نہیں لی. ٹھیک ہے, تو خوراک کے لیے آپ کو جو کھانا کھانے کی جو آپ ایک جسے بھوک لگنا کہتے ہیں, کیا آپ کو ریگولرلی بھوک لگ رہی تھی؟ جیسا کہ مارک نے کہا کہ ان کو بھوک نہیں لگ رہی تھی لیکن وہ لیکوڈز کے اوپر گزارا کرتے تھے, تو آپ کا کیا تھا؟ آپ کو بھوک لگ رہی تھی, ساتھ ساتھ لیکوڈز بھی لے رہے تھے اور ہارڈ فوڈ بھی لے رہے تھے؟ پلیز. ہاں جی, میرے لیے تو سب کچھ نارمل تھا. جیسے میں نارمل روٹین میں نارمل لائف میں سونے کی ٹائمنگ, کھانے پینے کی ٹائمنگ وہ روٹین کے مطابق تھی, تو کوئی اس میں کوئی چینج نہیں تھا. میں نارملی جو ہے کھانا کھاتا رہا ہوں اور نارملی ہر چیز جو ہے نارملی ٹائم گزارا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ مجھ پہ اس طرح کی میری کنڈیشن بھی ہوئی. حمزہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے دنوں کے اندر ریکور ہو چکے تھے کہ جب سے دوبارہ آپ نے ٹیسٹ کروایا اور نیگیٹو آیا, تو یہ کتنے دنوں کا ٹینیور تھا آپ کا سارا؟ نارملی ڈاکٹرز نے جو بولا تھا انہوں نے کہا تھا کہ 2 ویکس بعد آپ کا دوبارہ ٹیسٹ لیں گے, اور تقریباً 2 ویکس بعد انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ لیا, وہ نیگیٹو آیا. اس کے بعد پھر 3-4 دن بعد ایک اور ٹیسٹ میں نے کروایا پرائیویٹ شوکت خانم لیبارٹری سے, وہ بھی نیگیٹو آیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا. دیٹس گریٹ, زبردست. مارک, کمنگ بیک ٹو یو ڈیئر, please tell us, I mean, you discussed few things regarding your food and isolation period, but what precautionary measures should be taken by an individual to just avoid spreading from a patient to the healthy person? I mean, as you were the patient, what were the different steps you were observing not to spread it to others, please? Well, the recommendations in the UK is to keep up to 2 meters away from anyone, contact with anybody. Clearly, there's no personal contact with people. It's to stay at home as much as you possibly can and only go out for food when you need to. In the UK, the supermarkets have got very strict measures about how far you can be away from people. I now, because I mean I may have had the virus, but I'm still worried. So when I go out now, I wear surgical gloves. I use hand sanitizer, and washing hands is really critical. Whenever you touch anything, you must wash your hands afterwards. Right. So you want to say for our audience, you just suggest that while going outside mask should be worn, and alongside the hand sanitization is mandatory and important. Additionally, if somebody touch anything, so they must wash their hands. Yeah, I'm not sure the masks. There's nothing being proven at the moment whether wearing a mask or not is going to work. There's no proof. But keeping a distance from people is really important. That's great. Mark, can you recall that I'm sure that as you mentioned earlier, you don't know that how you got infected from this virus, but can you expect just a rough idea that what do you believe that where you get this virus from and how? Well, I think, as I said earlier, I think it was because I met these 2 people 4 or 5 days before I got the symptoms, and they told me they'd just come back from a holiday in China. And I remember at the time, because we weren't serious at the time about it, thinking, oh, well, I wonder if they've got the virus. But I remember not shaking their hand
but I was in their company, so I wasn't keeping a distance. So it may be of them. It could have been anyone. It could be anyone. Yeah, exactly. That we understand. And I am sure that recently I was just reading a scientist report, and they were mentioning that while talking to other people, there are chances to get infected by this virus, because these microscopic droplets are very near and they move around in the air, and it could be one person could be infected while talking to other. So safe distance is really very important to just get it avoid. Yeah, absolutely. Keep distance. If you touch things, make sure you have a hand sanitizer or you wash your hands regularly is the most practical things you can do. And stay at home as much as you can whilst, I mean, in Pakistan, I'm not sure where you are with the peak of the pandemic, but in the UK, it's looking like it's flattening out because we've all been forced to stay at home. All right. हमजा, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जैसा कि अभी मार्क से भी हमारी बात हो रही थी, ही इज़ नॉट श्योर अबाउट कि कैसे कोरोना उनको लगा, उनको याद नहीं है, पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से वो इन्फेक्ट हुए, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि वो एक कंपनी के अंदर काम करते थे, तो लोगों के साथ 5-6 दिन पहले, इन्फेक्शन से 5-6 दिन पहले उनकी बातचीत चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी, तो उनको ख्याल है शायद कि ये कोरोना उनको वहाँ से लगा है। तो आप ये बताइए, अपना थोड़ा सा ये बताइए कि आपको क्या ख्याल है या आपके जहन में क्या स्टोरी चल रही है कि हाउ यू गॉट इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस कोरोना? मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन मैंने ट्रैवल किया है 21 मार्च को पेरिस से इस्लामाबाद। ठीक है। और एयरपोर्ट पे लोगों का रश, क्राउड बहुत ज़्यादा था, और इवन प्लेन में भी जो है फ्लाइट फुल थी, और मैंने मास्क यूज़ किया है, ग्लव्स वगैरह मैंने यूज़ किए थे, लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकता एग्जैक्टली कि कैसे ये एयरपोर्ट पे हुआ है या प्लेन में हुआ है। ऑल द टाइम जो है मैंने मास्क पहना हुआ था और ग्लव्स भी पहने हुए थे, बड़ी मैं केयर करता रहा हूँ, और मुझे लगता है मे बी ये एयरपोर्ट पे हो गया हो या प्लेन में हो गया हो। ठीक है। अच्छा हमजा, आपने जैसे बताया कि आप एक गवर्नमेंट के अस्पताल में, सियालकोट के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर आप वहाँ पे क्वारंटीन रहे, तो वहाँ पे हॉस्पिटल की क्या कंडीशंस थी? क्वारंटीन किस तरीके से, लोग जो हैं हॉस्पिटल्स में जो क्वारंटीन हो रहे हैं या आइसोलेट हो रहे हैं, वो किस तरीके से रखा जा रहा है? उनको बेड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है? आपस में बातचीत लोग करते हैं या नहीं करते? कंप्लीटली उनको किस तरीके से वहाँ पे माहौल फराम किया जा रहा है जिसके अंदर वो आइसोलेट या क्वारंटीन हो रहे हैं? जो हॉस्पिटल की कंडीशन है वो तो बड़ी डिस्गस्टिंग थी। मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इस तरह का जो है फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे। अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरह से इन्होंने ट्रीट करना है, तो मैं शायद घर में ही आइसोलेट हो जाता, मैं अपना टेस्ट भी ना करवाता और खुद ही घर में आइसोलेट हो जाता। ठीक है। वहाँ पे अपना एक तो पहले नंबर पे जो फर्स्ट डे फूड प्रोवाइड की गई कैंटीन की फूड, वो बड़ी अपना डिस्गस्टिंग थी, और दूसरा जो पानी आता था वो भी जो है अपना साफ पानी नहीं था, उसमें अपना वॉशरूम बड़े गंदे थे, और बाकी जो है अपना उन्होंने डोर बाहर से लॉक किया हुआ था, और ऐसे ही फील हो रहा था जैसे मैं प्रिजन में हूँ। और ठीक है, बस तो खाना वगैरह आपको यहाँ पे खाना वगैरह जो है वो खुद अंदर आके देते थे, टेबल पे रखते थे, आप एक रूम के अंदर तो वहाँ पे मौजूद थे, तो खाने वगैरह का क्या सिस्टम था यहाँ पे कि ओपनली वो ट्रैवलिंग हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी? क्या जो लोग आपको खाना देने आते थे, आपको ट्रीटमेंट करने के लिए आते थे, वो स्पेशल अपने पूरे जो हैं वो इंतज़ामात के साथ आते थे, या नॉर्मली जैसे चल रहा होता है हॉस्पिटल्स में वैसे ही थे? नहीं जी, जो स्टाफ था, जो अपना 2-3 दफ़ा जो है ना डेली डॉक्टर भी आता था, और स्टाफ के भी जो लोग हैं अपना वो चक्कर लगाते रहते थे। शुरू में तो अपना नहीं वो आए, बाद में मैंने कंप्लेन की, कॉल की डीसी साहब को, फिर उन्होंने जो है ना उस पर एक्शन लिया, और उसका बड़े पॉजिटिव जो है उसका रिजल्ट रहा, और बाद में फिर जो है डॉक्टर भी 2-3 दफ़ा आते रहे हैं, और स्टाफ भी आता रहा। उन्होंने बाकायदा किट की होती थी, और वो जो है ठीक है। अमीर हमजा, ये बताएं कि डॉक्टर आके क्या चेक करते थे? डॉक्टर आके क्या कोई दवाइयाँ दे के जाते थे, कोई
कोई मतलब उनका डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट क्या रहता था? वो सिर्फ आपके आके हालात पूछते थे या कोई मेडिकेशन या कोई दूसरी इंतजामात भी करते थे? करते क्या थे आके जब आपको चेक करने के लिए आते थे डेली 2 टाइम? जी, वो डॉक्टर जो है ना वो आके पहला उनका क्वेश्चन होता था, अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कफ तो नहीं है, तो और बाद में फिर वो फीवर चेक करते थे और ब्लड प्रेशर चेक करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है डेली जो है सारा कुछ नॉर्मल रहा, फीवर भी नहीं भी था, टेम्परेचर भी नहीं था और दूसरा ब्लड प्रेशर का भी कोई इशू नहीं था। और मेडिसिन की फिर मैंने एक दिन भी कोई किसी तरह की मेडिसिन नहीं ली। ठीक है हमजा, आपसे लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप काइंडली ये बताएं, मैं इसमें आपको इंटरप्ट नहीं करूँगा, हमारे ऑडियंस के लिए कम्प्लीटली ये बताएं कि अगर किसी बंदे को कोरोना हो जाता है, कोई शख्स कोरोना का इन्फेक्टेड मरीज़ बन जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, और जहाँ पर वो आइसोलेट हो रहा है, अलहदगी अख्तियार कर रहा है, वहाँ का माहौल किस तरीके से उसको रखना चाहिए, और ड्यूरिंग आइसोलेशन के दौरान उसको क्या खुराक खानी चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और क्या रेमेडीज यूज़ करनी चाहिए ताकि वो जल्द अज जल्द रिकवर हो सके? देखें जी, पहले नंबर पे तो ये है कि अगर किसी का कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो उसको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ इसको आप अपने माइंड में खा लेंगे कि मुझे कोविड-19 हो गया, तो फिर मैं भी उसके जो है अपना नेगेटिव असरात हों। बड़ी ज़बरदस्त बात है। पॉजिटिव तरीके से लें, इसको पॉजिटिव तरीके से लें और ये सोचें कि ये मेरे पास जो टाइम है, मैंने खुद को ये टाइम देना है, अपना डाइट प्लान अच्छा करें, वेजिटेबल्स यूज़ करें, फ्रूट्स यूज़ करें, और अपना डेली जो है 2-3 दफ़ा दिन में पॉसिबल है तो स्टीम लें और हॉट वाटर यूज़ करें। और दूसरा ये है कि कुछ लोग भी जो है जो अपना इसको बड़ा नेगेटिव तरीके से लेते हैं और तरह तरह की बातें जो है उनको भी चाहिए कि इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर किसी को ये किसी के हाथ में नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। ये एक वबा फैली हुई है, ये किसी के कोई नहीं चाहता कि मुझे ये बीमारी लगे। अगर किसी को हो जाता है तो उससे जो है अपना उसकी नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि उस बंदे को हौसला दें और इसको इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए जिस तरह से ये इशू क्रिएट किया, जो मेरे साथ हुआ कि अपना जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस के लोग और सारे जो है ऐसे इन्होंने इशू क्रिएट करके आए हैं उधर मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और सारा उन्होंने जो है ना पूरे मेरे सिटी में जो है ना इसका शोर डल गया और ज़्यादा। तो हमजा, ये जो आपने हेल्दी फूड की बात की है कि ये क्या, मेरा सवाल फिर से ये होगा, बहुत सारे लोगों के जहन में भी ये सवाल है कि जब कोई क्वारंटीन में चला जाता है, कोई इन्फेक्ट हो जाता है, तो क्या दवाई कौन सी लेनी चाहिए, कोई दवाई भी है इसके लिए? आई मीन वो तो आई एम श्योर कि कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बना, तो ये जो लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं, क्या इनको कोई नॉर्मल कौन सी छोटी मोटी कोई दवाई भी दी जा रही होती है, या सिर्फ और सिर्फ खुराक और ड्रिंक्स के ऊपर ही ये अपना इत्तफाक कर रहे होते हैं? देखें जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर इस दौरान आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है, तो फिर वो आपको फीवर की दवाई पैरासीटामोल ले लें, और अगर आपको उस दौरान खांसी हो जाती है तो खांसी का कोई सिरप ले लें, अपने डॉक्टर से रुजू करें, जो वो आपको सजेस्ट करता है उसके मुताबिक जो है मेडिसिन लें। और नॉर्मली जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है सेहत किस तरह से है, किस तरह का आपको इन्फेक्शन है। तो मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा हूँ जैसे अब हूँ, और मैंने इसलिए कोई मेडिसिन नहीं यूज़ की। जी बिल्कुल ठीक। कमिंग बैक टू मार्क, you know, in the current situation, honestly speaking, more than corona infection, the anxiety, depression, panic, that is being observed a lot. So what you have to say about keeping in view the anxiety, depression and panic and chaos created among the society? What you have to say about this, please? Well, obviously when you're ill and got the virus, that's less of an issue because you're trying to recover. But my observation afterwards is that you've got to find ways of engaging with people, even if remotely, like using Zoom, because being self-isolated can be very debilitating. And so my advice to people if they're self-isolating is to well, three things. One is try and
be healthy, because it's difficult. Secondly is to try and engage with other people but do it remotely. And third, eat healthily. Sorry, the third one? Eat healthily. Because as you'll see, the statistics across the world are showing that the people that are dying mostly from this are people that are overweight. Yes, some of them have underlying health conditions. And they're not just old. I mean, people of my age and younger are dying of this because, you know, I think it's partly lifestyle. So certainly I'd eat healthily. All right. So, Mark, thank you very much that you have shared your corona experience, that as you have been infected about this, you have discussed about the different symptoms that you had regarding this COVID-19 virus. Alongside, you told us about the remedies that could be used during the isolation period. And most importantly, that you suggested a person should be getting healthy food and should be in contact distantly or virtually with other people, can really eradicate the issue, can really eradicate the you can say the virus. So thanks once again for sharing the insightful information with our audience. We are much obliged. Welcome. Shukriya. Thanks a lot. जी तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा जिसमें हमारे पास अमीर हमज़ा और मार्क मौजूद थे, और ये दोनों वो हैं जो कोरोना के पेशेंट थे और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन 14 डेज़ उन्होंने इससे रिकवर किया। इस रिकवरी के दौरान उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज था, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अभी कोरोना से परेशान हैं, कि उनका कहना था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना बीमारी एक वायरस ज़रूर मौजूद है, लेकिन अगर इसको अपने दिमाग पे सवार कर लिया जाए, अगर इसको अपने दिमाग पे हावी कर लिया जाए, तो परेशान होने के, बीमारी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पे एक बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो उन्होंने डिस्कस की, कि जब भी आपको, अगर किसी को कोरोना लाहक हो जाता है, तो सेल्फ आइसोलेशन में आप कोशिश करें हेल्दी फूड खाएं, ड्रिंक्स लें, 2 से 3 दफ़ा दिन में भाप का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके लिए अभी तक कोई मेडिकेशन या कोई वैक्सीन वगैरह तो अभी दरियाफ्त नहीं हुई। यही एक हल है कि जिससे जल्द अज जल्द रिकवर किया जा सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए कि जो अभी तक सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, उनके लिए खुदारा ये मैसेज है कि डिस्टेंस को आपस में कीप डिस्टेंस। मार्क का भी यही कहना था कि मास्क लगाने या शेक हैंड करने के बजाय इम्पॉर्टेंटली उन्होंने जो फोकस किया कि 2 अशखास के दरमियान या ग्रुप्स के दरमियान आपस में डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। ये वायरस एक ऐसा है कि जो 2 लोगों के दरमियान बातचीत करने से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। आवाम से इल्तमास है और रिक्वेस्ट है कि आपस में डिस्टेंस रखें, सोशल गैदरिंग कम से कम रखें। सिर्फ एहतियात ही इसका इलाज है। अल्लाह ताला आपको और हमें कोरोना की इस आफत से बचाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।